हाय हाय साथ कैसे हो भाई? हेलो ठीक आप सुनाए। Good. Let's start with FAR 2. I think FAR 1 we completed yesterday. So let's start with FAR 2. Lot of basics we already covered in our couple of demo sessions, but again we'll look into three your backer material. Before we go into the FAR 2, want to understand two things from you. How comfortable you are to prepare and create the journal entry, and do you know how a ledger postings are done? Have you done this basics before I've only watched the lecture, but I haven't done it myself. in your Or graduations ever? Have you done ledger postings and all those things? the max I have done is your basic entry. If it's asset, then debit. If it's liability, then credit. Expense and purchase or debit. Income and sales are credit. And then these basic entries, just closing the trial balance and putting them closing the T account and putting them in the trial balance. So do you know how to create T accounts? Little bit, yes. Okay, because those concepts will come at advanced level in your FAR 2. So if they are not clear, then you will struggle to get a comfort on those topics. So we'll see if you're not comfortable, then we need to get the basics covered first, and then only we can go at advanced level. Okay. Okay, let's start with the FAR, FAR 2. So what we have in scope, we are going to cover accounting changes. Already, sorry, already we did in our basics accounting changes. This can be prospectively, this can be retrospective. Addition, error correction, we will see. Then we are going to understand adjusting entries. Again, we already see this. A is equal to C plus L. Assets have a debit balance. Liability has a credit balance. How adjustments take place for deferred revenue, prepaid. All those things we will quickly revisit. The module 4, a very theoretical topic. What are notes to accounts, notes to financial statements, how they are prepared, what sort of notes are written there. Module 5 is a small new concept of subsequent events. Important, not complicated one, but important for exam point of view. We'll do it very quickly. Module 6, again a theoretical topic, fair value measurement. Again, we had this in our basic as per our old plan. So we need to understand when we say fair value, then what is the fair value? What sort of fair value we should rely upon? Then we will see module 7, which is a special purpose framework like a cash basis accounting, income tax basis of accounting. And here the things will get tricky. So you will have a questions in the exam which ask you to convert your accrual financial statements into a cash based financial statements or vice versa. So your concept needs to be very clear that how accounting actually works in cash basis versus accrual method of accounting. Apart from this, two chapters will be left in FAR 2. So both are a big chapter. So we will cover at a later stage after this small topics are done. One is the RevRec, very complicated, very challenging topic, heavily tested in the exam. It's actually a complicated topic. It will train out your energy to understand. And then ratio analysis, not complicated but little bit lengthy. There will be 15-20 ratio. You have to remember the formula, how to calculate the ratio. So first we'll close off all this small topic. Hopefully today, if not today, then early tomorrow, all these small topics. And then we'll cover RevRec and ratio analysis in the coming session. शुरू करते हैं accounting changes and error corrections. Already we did a one part before. Accounting changes सबसे पहले क्या होता है? So it could be a change in accounting principle or it could be a change in accounting estimate. We saw in the basic session, if it's a change in accounting estimate, it is accounted prospectively. For example, change in the bad debt provision percentages, change in warranty percentages. So where a decision power is with management, and if there is a change in estimate, accounting happens only prospective basis. However, if there is a change in accounting principle, which means you have a method given in the accounting standard and that method is getting changed. Let's say FIFO to LIFO, straight line to WDV method of depreciation,
revenue recognition method, let's say cost completion to percentage of completion method. So where option was given by accounting standard and that methods are changing, then it is called change in accounting principle. Change in accounting principle have a retrospective effect. Now, what is the meaning of retrospective effect? You adjust all the financial statements which are presented. Now, in the previous FAR 1, we saw comparative financial statements are not compulsory under US GAAP, but under SEC reporting, it is mandatory. So if the company is reported under SEC, you will have a 3 years or 2 years of financial statements presented. In that situation, you have to adjust a beginning retained earnings of the earliest period presented in your SEC reporting. For example, you are presenting financial statements for year 3, year 2, and year 1. Now, let's say in year 3, there is a change in accounting principle. So, you have to adjust earliest period, which is year 1, year 3, year 2, year 1. What is the earliest period? Year 1. So, adjusted retained earnings opening balance needs to be adjusted for year 1. If you are not doing SEC reporting, you are only submitting current year financial statements, then only current year retained earning balance needs to be adjusted for. And then there is something called error correction, exactly the same concept as what we have in change in accounting principle. If there is an error, you need to correct the error retrospectively. What is the meaning of retrospectively? If you are SEC filler, then adjusted retained earning beginning balance of the earliest period presented. If you are not in SEC, you are not filing comparative financial statement, then current year opening retained earnings needs to be adjusted. If amount is not material, then you may ignore the error correction and you may correct everything in the current financial year. However, the materiality depends on the auditor's judgment and not the judgment of the management. So, concepts again: change in accounting estimate prospective, principal retrospective, error correction again retrospective. Now there is a one big exception here, जो है change in accounting principle में. If change in accounting principle which is governed by property, plant and equipment, even though it's a change in accounting principle, let's say SLM to WDV or change in useful life, all those things, even though they are change in accounting principle, as an exception, they are only treated prospectively. Rest all change in accounting principles treated retrospectively. Only the change in accounting principle for your property, plant and equipments, they are treated only and only prospectively. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. ये स्लाइड पे कोई भी क्वेश्चन, जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल थियरी फ्रेमवर्क. लेट्स सी. So what are the examples of change in accounting estimate? So change in the life of the fixed assets. Year-end accruals. Accruals are always based on the estimates. 3% bad debt provision, 5% warranty provision. Writing down the inventory. Again, estimate. You feel that inventory will be sold below the cost. That's your estimate, not the accounting method. Let's say any IRS tax adjustments. Change in accounting estimate. You assume that you will be paying 3% of the taxes or 5% of the penalty. End of the day, you end up paying different amounts. Change in accounting estimate. Litigation settlement. So let's say there is a legal claim going on, and today you are assuming you will be paying $1 million to settle the debt. Actual outcome was $2 million. So it's a change in accounting estimate. This is the important one. Change in accounting principle inseparable from change in accounting estimate. इसका मतलब है, if there is a change in accounting principle under property, plant and equipment, it is still treated prospectively. The technical English says change in accounting principle inseparable from accounting estimate. इसका simple meaning ये है कि if there is a change in depreciation method or any change under property, plant and equipment, don't treat retrospectively, treat prospectively only. Let's say there is a change in estimate for the discontinuing operation. When will it, for the previous one, when will it be retrospectively? For PP&D, never retrospective, always prospective. But for other methods, let's say change in revenue recognition, change in inventory, it's a change in accounting principle, retrospective. But for PP&D, everything is prospective only.
But we are only changing the estimate, or we're changing the principal Even of the method people. also, principal also. So suppose you were charging SLM, now you are charging WDV prospective. The last one, revision of discontinuing operations. Again, we saw this in FAR 1. Let's say you have estimated that you will be having impairment losses, or let's say you estimated that you will be discontinuing operation. If there is any change in estimate, again, a prospective treatment only. What is the meaning of prospective, current and future period? You don't need to revise the prior period. You don't need to revise the opening retained earnings. यहाँ तक कोई क्वेश्चन? No. ओके, नो क्वेश्चन। एक एग्जांपल देखते हैं। दिस इज फॉर अ एक्सेप्शन, जो यहाँ पर हमने बोला कि इवन दो इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, वी स्टिल ट्रीट प्रोस्पेक्टिवली फॉर पीपीएनडी. So let's say you have purchased a truck. Now truck was costing you a $90,000. Useful life initially 10 years thi. Now you change the life to 5 years. And this change taken place to a third year. So what will happen? Year 1 depreciation 90,000. Year 2 depreciation 90,000. Year 3 onwards आपका depreciation कैसे गिना जाएगा? Your 72,000 is the carrying value. How carrying value is calculated? Cost of 90,000 minus year 1 depreciation minus year 2 depreciation. So 90,000 minus 9,000 minus 9,000 gives you 72,000. What is the remaining useful life? Now only 3 years left. Originally it was 10 years. Now you change the life to 5 years. 2 years are already done. So 3 years are left. So 72,000 divided by 3. The third year onwards, the depreciation is 24,000. So this is a treatment done prospectively. You don't change year 1, year 2. You take the impact in the year in which there is a change in accounting principle or change in accounting estimate. Okay. ठीक है, चलो एक बार क्विकली बुक देख लेते हैं. ओके, लेट्स टेक दिस वन एज वेल. इसके बाद बुक देखते हैं. So the next one is a change in accounting principle. So what change in accounting principle says that anything which is offered by accounting standard, अगर आप change कर रहे हो, change in accounting principle गिना जाएगा. And ये particular cases आप retrospective basis पे present करोगे. Now कैसे present करोगे? अगर आप SEC reporting में हो and you are presenting let's say year 1, year 2, year 3 financials. So earliest period का opening retained earnings which is year 1 का retained earnings आप change करोगे. अगर आप SEC रिपोर्टिंग में फॉल नहीं करते हो, यू आर जस्ट प्रेजेंटिंग करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप इसी साल का बिगिनिंग रिटेन अर्निंग्स चेंज करोगे. नाउ अ स्मॉल कॉन्सेप्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इफेक्ट्स को चेंज करोगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को आप चेंज नहीं करोगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट इफेक्ट्स एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स? फॉर एग्जांपल, आपका मान लो इन्वेंट्री वैल्यूएशन हुआ है फीफो बेसिस पे और आपका नेट प्रॉफिट है 100,000. बिकॉज आपका प्रॉफिट 100,000 है, आपने मैनेजमेंट को बोनस दिया है $10,000 का. नाउ यू आर चेंजिंग द इन्वेंट्री वैल्यूएशन फ्रॉम फीफो टू वेटेड एवरेज, और आपका जो प्रॉफिट है जो 100,000 था वो कम हो गया $60,000 हो गया. नाउ बिकॉज ऑफ दिस चेंज आपका जो मैनेजमेंट का बोनस था वो भी कम होना चाहिए था. बट बिकॉज इट्स अ पास्ट इवेंट, आपने ईयर 1 में ऑलरेडी $10,000 मैनेजमेंट को बोनस पे कर दिया है. यू आर नॉट गोइंग टू कॉल द बोनस बैक फ्रॉम द मैनेजमेंट. आप मैनेजमेंट को ऐसा नहीं बोलोगे कि मुझे $4,000 वापस करो बिकॉज मैंने इन्वेंटरी वैल्यूएशन चेंज किया है. सो इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट इफेक्ट. हम लोग अकाउंटिंग वही चीज की चेंज करेंगे जहां पर डायरेक्ट इफेक्ट है. सो इन्वेंटरी वैल्यूएशन आप चेंज करते हो, यू हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर कॉस्ट ऑफ सेल्स, यू हैव अ इम्पैक्ट ऑन योर क्लोजिंग स्टॉक. So that is a direct effect you will change. But there could be an indirect effect on your expenses, on your bonuses, on your deferred tax asset, deferred tax liability, income tax provisions. All these are called indirect effects of the transaction. इनको आप change नहीं करते हो. So you again only make a reflection of direct effect changes only, not making a change of the indirect effects. क्यूमुलेटिव इफेक्ट आप कहां पर दोगे? अगेन सेम प्रिंसिपल, एसएससी रिपोर्टिंग है तो ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स बैलेंस ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड. अगर आप सेम ईयर को ही प्रेजेंट कर रहे हो, देयर इज नो कंपैरेटिव फाइनेंशियल्स गिवन, इन दैट सिचुएशन करंट ईयर का ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स. नाउ व्हाट इज द जनरल रूल?
अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड फॉर एसएससी रिपोर्टिंग, अदरवाइज आप करंट ईयर को ही सिर्फ इम्पैक्ट करोगे। अगेन अ स्मॉल थियोरेटिकल टॉपिक ओनली। एक एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्यूमुलेटिव इफेक्ट कैसे हम लोग शो कर सकते हैं। सो लेट्स से कि कंपनी पहले फीफो यूज करती थी, अब वेटेड एवरेज यूज करना उसने शुरू कर दिया जनवरी 1 ईयर 5 में। अंडर वेटेड एवरेज मेथड कंपनी का इनकम आता था 800 के, अंडर फीफो कंपनी का इनकम आता था 600 के। तो कंपनी फीफो फॉलो कर रही थी, मतलब कंपनी ने इनकम रिकॉर्ड किया है क्यूमुलेटिव 600 के का। बिकॉज इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल वी ट्रीट इट रेट्रोस्पेक्टिवली, कि अगर कंपनी पहले से ही वेटेड एवरेज फॉलो करती तो उनको 8 लाख का प्रॉफिट होता। दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ द चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज इंक्रीज इन नेट इनकम बाय $200,000। हाउएवर ये $200,000 का आपका इनकम तो इंक्रीज होता, लेकिन बिकॉज यू इंक्रीज योर इनकम, आपका टैक्स लायबिलिटी है ये भी आपका इंक्रीज होता बाय 30%, विच इज $60,000। तो आपका जो नेट रिटेन अर्निंग्स है, अगर आपने पहले से ही वेटेड एवरेज मेथड फॉलो की होती तो इस साल का ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स 1,40,000 से इंक्रीज होता। सो व्हेन यू प्रिपेयर दिस ईयर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप कैसे शो करोगे? रिटेन अर्निंग्स $X plus adjustment to retained earnings 1,40,000, you get adjusted beginning retained earnings. Clear with this example? How is weighted average done? So first in first out is just first item comes in We'll and see in first out. inventory standard. Inventory standard में देखेंगे। Weighted average is basically पूरे साल का आप एक average निकालते हो and then based on that rate you do the accounting. Hmm. All right, I think let's see one more example. This is the exceptional wala example where we say कि PPND, even if it's a change in accounting estimate, even if it's a change in accounting principle, we treat prospectively only. इसका इंग्लिश कैसा लिखते हैं? It's they say it's impracticable to separate from the change in accounting estimate. So हम लोग क्या बोल रहे हैं कि if there is a change in accounting principle which is inseparable from the change in accounting estimate, then it is still treated prospectively. Only and only exception इसका है आपका property, plant and equipment. Or another example where information cannot be fetched from your accounting system. For example, आपने बिजनेस शुरू किया ईयर 1 to ईयर 10 आपने FIFO मेथड यूज की। Now year 11 you are changing to LIFO. However, under US rules, you are supposed to store the data only for the 7 years of period. तो आपने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 का डेटा डिस्कार्ड कर दिया बिकॉज दे वर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी मोर। तो नाउ इन ईयर 11 जब आपने मेथड चेंज किया, यू आर सीइंग कि आपके पास डेटा ही अवेलेबल नहीं है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू असेस द इम्पैक्ट ऑन द रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस। So if there is a genuine situation where past data is not available and it is not practical to obtain any reasonable estimate, तो वहां पर भी आप prospective application कर सकते हो, but you need to give into a notes to accounts the situation encountered and how you dealt with a such scenario. For example, let's see, if you are changing LIFO method of inventory, rebuilding old LIFO layers is practically impractical for your company. Now, because of this, आपने decide किया कि आप इसको prospectively ही treat करोगे from current year onwards, because past का data change करना आपके लिए almost impossible है. So, two exceptions जहां पर change in accounting principle है, still you take a prospective effect. Number one, PPND. Number two, आपके लिए it's impracticable to go back and dig into your past data and use any estimate. सेकंड देख लेते हैं एग्जांपल। अगर आप चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड करते हो, इवन दो दिस इज द चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसको हम ट्रीट करेंगे प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे ओनली। कोई क्वेश्चन यहाँ पर स्लाइड नंबर 1 to 6 में? Mhm. चलिए आपके बैकर मटेरियल पे आते हैं। आई वांट यू टू गो थ्रू पेज नंबर 63 से आप शुरू करो। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप गो थ्रू करो and then continue to go through till page number 66
एरर करेक्शन से अब स्टॉप हो जाना, एरर करेक्शन हमने नहीं किया है। सो 63 to 66 एक बार देख लो। सो सेक्शन 1, 2 एंड 3 फुल एक बार आप रिव्यू कर लो, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। चेंज इन अकाउंटिंग एंटिटी में क्या होता है? चेंज इन अकाउंटिंग एंटिटी सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था।
Suppose you are taking over another entity and there is a consolidation requirement. So in that situation, अगर आप comparative financial statements present कर रहे हो, so for the previous year also you have to present the data as if the consolidations took place in the previous years also. So एक fundamental principle है anywhere in any accounting, IFRS, US GAAP, any accounting gap you follow, when you prepare a comparative financial statements, all the assumptions which are used in the current financial year, the same assumptions has to be carried back to the previous year for presentation and disclosure point of view. So we are not saying that in year one the entity was acquired. Actually, entity got acquired in year two only. However, because we are presenting year two with year one, we are just presenting year one as if the consolidation took place in the previous year. So whenever you prepare any comparative financial statements, all the current year assumptions and current year accounting principles have to be matched to the compared previous period. Okay, I'm done with. Done? Yes. चलिए वापस चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे. Let's see now error correction. Now error correction of the previous period, if only if it's material. If something is not material, maybe we can correct in the current period itself only. However, if there is a material mistake, now error means only mistake which are unintentional. It could be a mathematical mistake, it could be a wrong accounting principle followed, it could be insufficient or lack of information based on which an error caused or changed from non-gap to gap. Any reasons, if you identify there is a prior period which has the error, then you have to correct the prior period. Now, when we say you have to correct the prior period, it iska matlab hai it's a retrospective application. Same principles are followed जो हमने previous slides में देखे for what happens towards the uh, retrospective application. So suppose if you are preparing a comparative financial statement, so earliest period जो भी present हुआ है उसका opening retained earnings आपको ठीक करना पड़ेगा. If comparative financial statements are not presented, then current year के opening retained earnings में आपको error का effect देना पड़ेगा. So for example, let's say a manufacturing company has missed to record $4.5 million of depreciation in year one and year two. That's a big error. They missed to record a depreciation for 2 years. Now, suppose if you are only preparing you are only preparing a year three financial statements and no comparative financials are presented. So what you will do, you will reduce your opening retained earnings by 2.7 million. Why 2.7 million? आपका जो एक्सपेंस था 4.5 मिलियन, अगर आपने रिकॉर्ड किया होता ईयर वन ईयर टू में तो आपका इनकम 2.7 मिलियन से कम होता. हाउ 2.7 मिलियन? 4.5 मिलियन का एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस के ऊपर आपको 40% टैक्स बेनिफिट मिलता गवर्नमेंट से. सो नेट 2.7 मिलियन का आपका रिडक्शन दिखेगा एज अ reduction of opening retained earnings in the year 3. However, if you are preparing a comparative financial statements of year 2 and year 3, तो आपको year 2 का beginning retained earnings पहले ठीक करना पड़ता. ठीक है. सो सेम प्रिंसिपल, कंपैरेटिव है तो अर्लीस्ट पीरियड का ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स ठीक करो. इफ कंपैरेटिव नहीं है देन करंट ईयर का ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स आपको ठीक करना पड़ेगा. यू हैव टू आल्सो गिव द डायरेक्ट इफेक्ट्स. डायरेक्ट इफेक्ट्स क्या क्या होता है? सपोज इट्स इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स उसका टैक्स इफेक्ट. डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उसका टैक्स इफेक्ट. रेवेन्यू रिकग्निशन मेथड, तो रेवेन्यू रिकग्निशन और उसका डायरेक्ट टैक्स इफेक्ट. Indirect tax effects you can ignore, which are likely to be deferred tax assets and deferred tax liabilities. Clear with Change this slide? changes are only made to retained earnings, not any other thing. Yes, only beginning retained earnings. So there cannot be a problem in any other component of the balance sheet. If it's a direct effect, then you have to prepare. So for example, let's say a depreciation. So what is your entry? Your entry is retained earnings account debited to accumulated depreciation.
So accumulated depreciation automatically corrects your property, plant and equipment balance. Clear, confused? uh, एंट्री क्या depreciate होता है? डिप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? uh, debit depreciation expense credit uh, Let's do credit credit equipment. asset. Let's do credit equipment. So let's say year one, year two, आपके पास $10 million का इक्विपमेंट था. You did not charge the depreciation. सो ईयर थ्री का जो आपका बिगिनिंग बैलेंस होगा इक्विपमेंट का वो $10 million होगा, बिकॉज नो डेप्रिसिएशन इज चार्ज. Yes. फिर क्या होगा, उसमें से सबसे पहले माइनस होगा आपका प्रीवियस ईयर का एडजस्टमेंट. कैसे माइनस होगा? तो जो आप ये ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स ठीक करोगे ना, वो सीधा ठीक नहीं होता है प्रेजेंटेशन में, उसका एक जर्नल एंट्री गिरता है. सो द एंट्री इज ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इक्विपमेंट अकाउंट विच इज 4.5 million. इसके बाद आपका एक दूसरा एंट्री गिरता है विच इज योर टैक्स सेविंग्स. टैक्स सेविंग्स का आपका एंट्री क्या गिरता है? रिटेन अर्निंग्स अकाउंट डेबिटेड टू सेविंग्स इन इनकम टैक्स प्रोविजन. सॉरी माय बैड, उल्टा एंट्री गिरता है. टैक्स सेविंग्स प्रोविजन अकाउंट डेबिटेड टू रिटेन अर्निंग्स विच इज योर 40% ऑन 4.5 million. दोनों को आप जब नेट करते हो तो आपका रिटेन अर्निंग्स में इम्पैक्ट जाता है 2.7 million का, आपका एसेट में इम्पैक्ट जाता है 4.5 million का, और 4.5 million का 40%, आई थिंक इट्स रफली 1.8 million इफेक्ट जाता है आपका प्रोविजन फॉर इनकम टैक्सेस में. सो वेन एवर यू डू एनीथिंग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट्स ऑलवेज बाय अ वे ऑफ जर्नल एंट्री. तो इसकी हर एक इम्पैक्ट आपकी बैलेंस शीट में भी गिरती है अलॉन्ग विथ योर रिटेन अर्निंग्स. जनरल एंट्रीज किस मॉड्यूल के लिए चाहिए? रेवेन्यू रिकग्निशन या जर्नल एंट्रीज का कोई अलग से आपके बैकर में कुछ भी नहीं है. एंड अगेन हेंस आई स्टार्टेड ऑल विद बेसिक प्रिंसिपल्स कि आपको ए इज इक्वल टू सी प्लस एल क्लियर होना चाहिए. कि अगर आपको यहाँ पर पूछ लिया एमसीक्यू में कि पास द जर्नल एंट्री, कहीं पे नहीं है, बिकॉज बैकर में ये चीजें कवर्ड नहीं है. सो यू शुड नो हाउ टू क्रिएट द एंट्री एज अ बेसिक्स. okay. ठीक है, क्लियर है एरर करेक्शंस पे? Yes. चलिए, बिफोर गोइंग टू दी सब्सिक्वेंट इवेंट्स, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एडजस्टिंग जेई, लेट्स गो टू योर बैकर. एंड एक बार आप देख लो प्रायर पीरियड की एरर करेक्शंस की एक बार थियरी. सो सेक्शन 4 along with example number 2, and then we start with the adjusting journal entries.
In the example for accounting changes and error connections, uh, Hmm. the solution for the second one. So the errors in LIFO and FIFO, so will we report them in each of the specific years that they happened, or at the start year? No, at the opening retained earnings of the earliest period presented. So suppose you are in year 4, अगर आप comparative financials बना नहीं रहे हो, then year 4 का opening retained earnings में ही effect जाएगा. If you are presenting let's say year 3 and year 4, तो year 3 के opening retained earnings में जाएगा. If you are presenting year 2, year 3 and year 4, तो year 2 के opening retained earnings में इसका effect जाएगा. But the effect for year three will also go to year two, or ईयर 3 का इफेक्ट जो है वो ईयर 2 पे जाएगा. ईयर 2 का इफेक्ट है 3 एंड 4 दोनों पे जाएगा. सी दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो लेट्स फाइंड इट आउट. सपोज यू आर ओनली प्रेजेंटिंग ईयर 4 and this is your opening retained earnings, and let's say you are not given any amount. What we are saying ki the company is using the FIFO. लीफो से वो लोग फीफो पे जा रहे हैं. अगर फीफो पहले से ही वो लोग अगर यूज करते तो आपका नेट इनकम जो है 2.1 2.1, सो दिस इज 4.2, सो 5 मिलियन से आपका इंक्रीज होता. टैक्स रेट इज 40%. आई एम इग्नोरिंग टैक्स राइट नाउ ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए. सो 5 मिलियन से मेरा इनकम इंक्रीज हो जाता. सो आई पुट एडजस्टमेंट. सो दिस इज माय एडजस्टेड रिटेन अर्निंग बैलेंस 5 मिलियन ईयर 4 का. अब मान लो मैं बोलता हूँ कि नहीं, मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ईयर 4 एंड ईयर 3 दोनों को. तो मुझे ईयर 3 का रिटर्न अर्निंग्स सबसे पहले तो एडजस्ट करना है. सो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर मैं ईयर 3 में होता तो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थी. मेरे पास ये तो मेरा एक्चुअल ईयर का ट्रांजेक्शन हो गया. सो आई वुड बी करेक्टिंग 2.8 मिलियन विच इज ओपनिंग बैलेंस प्लस 2100 2100 प्लस 750 के. और मैं ईयर 4 में क्या करेक्ट करता. ईयर 4 में आई वुड बी करेक्टिंग ओनली 2.1 मिलियन. तो टोटल अगेन इट्स 5 मिलियन. सपोज मैं ईयर 2 प्रेजेंट कर रहा होता तो मेरा अर्लीस्ट पीरियड हो गया मेरा ईयर 2. सो मैं ईयर 2 में क्या करूंगा. आई एम गोइंग टू करेक्ट द ट्रांजेक्शन ऑफ ईयर 1 ओनली, सो विच इज 7,50,000. ईयर 3 में मैं करेक्ट करूंगा ईयर 2 का रिटर्न अर्निंग्स विच इज 2.1 मिलियन. और लास्ट में मैं करेक्ट करूंगा 2.15 मिलियन. सो अगेन मेरा टोटल हो गया 5 मिलियन. सो अर्लीस्ट पीरियड जब आप प्रेजेंट करते हो वहां पर जब आप करेक्ट करते हो यू सी कि प्रीवियस ईयर तक कितना एरर बाकी था. सो ईयर 2 के लिए प्रीवियस ईयर्स हो गया ईयर 1. ईयर 3 के लिए मेरा प्रीवियस ईयर हो गया ईयर 2. ईयर 4 के लिए मेरा प्रीवियस ईयर हो गया ईयर 3. एंड इफ आई एम स्ट्रेट अवे गोइंग टू अ नेक्स्ट ईयर ईयर 5, तो मुझे सारे की सारी चीजों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना पड़ेगा. तो इफ यू आर डूइंग अ सेपरेट प्रेजेंटेशन यू आर डूइंग लाइक दिस. अगर आप स्टैंड अलोन फाइनेंशियल्स प्रेजेंट कर रहे हो ओनली ईयर 4 का, तो आप स्ट्रेट अवे 5 मिलियन का पूरा इफेक्ट दे दोगे एज अ ओपनिंग रिटेन अर्निंग्स एडजस्टमेंट. ठीक है. okay, okay, ओके. एनी अदर क्वेश्चन इन दिस एग्जांपल नंबर 2? no, ऑल राइट, चले आगे. एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज. इफ यू रिमेंबर ओल्ड डेज सेशन 1 सेशन 2, मैचिंग प्रिंसिपल याद है आपको. व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? yes. यस, नो? We record the only the amount of expenses we incurred in that year. Exactly. Not in that year, in the year in which revenue is generated. So the expenses are recorded by matching the revenues. And here we are talking about direct expenses. तो आपके एक्सपेंस अगर आपको याद हो तो हमने ऐसा कुछ किया था. आपके एक्सपेंस दो टाइप के हो सकते हैं. एक जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है और एक आपका पीरियड से रिलेटेड होता है. सो प्रोडक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज पर द सेल्स डन इन द ईयर. और अगर आप सेल्स नहीं कर पाए हो तो आप क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हो टू मैच द मैचिंग प्रिंसिपल. बट पीरियड के एक्सपेंस जो होते हैं, लेट्स से रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन, all those expenses are incurred whether you do a sale or not. So these are recorded in the period in which
expenses are incurred. Kind of accrual method of accounting, but still it is covered under matching principle as well. But फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल में, कि अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हुआ है वो सारे एक्सपेंसेस उसी पीरियड में आप रिकॉर्ड करो. Now we have seen all these examples back in our session 1, session 2. So I'll quickly walk you through, और जहां पर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को पूछते जाना. Accrual basis of accounting is in accordance with the US GAAP and matches the revenue with the expense. So this is a matching principle. This is your accrual method of accounting. Now, in case of deferred revenue, what happens in case of deferred revenue? Cash is received before the revenue is earned. So what is your entry? Cash account debited to deferred revenue. So आपने पैसा कलेक्ट कर लिया, आपने सर्विसेज अभी डिलीवर नहीं की है. It's kind of advance income. In case of prepayment of expenses, you are prepaying the cash today, but expenses will be incurred in future. A great example for this item is your prepaid insurance. You record the expense in the period in which it pertains to. Now, based on these two concepts, we have some tricky complications coming in module 7 of this chapter. तो हम लोग यहाँ पर एक बार फिर चीजों को revisit करेंगे. Now we saw one basic principle, A is equal to C plus L in the first session. If you understand this, you don't need to look at the theory of this particular chapter. आपको सिर्फ example solve करना है. What this concept says कि आपका जो accounting है वो हमेशा दो साइड चलता है. अगर asset का by default debit balance होता है, if asset is increasing तो आप उसको further debit करो. asset का by default debit balance होता है, asset अगर कम हो रही है तो आप asset को credit करो. इक्विटी एंड लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है. इफ लायबिलिटी और इक्विटी बढ़ रहा है तो आप उसको क्रेडिट करो, अगर वो कम हो रहा है तो आप उसको डेबिट करो. If you understand this particular concept, then your all the adjusting journal entry becomes pretty easy. Let's see first entry. Deferred revenue की एंट्रीज हम कैसे बनाएंगे. So deferred revenue या unearned revenue सबसे पहले होता क्या है. So unearned revenue का मतलब होता है you have collected the cash but you have not delivered the service. तो कैश आपको मिला, that means cash is your asset. कैश आपको मिला तो आपकी asset और increase हो रही है, so you debit the cash. ऑन रेवेन्यू का मतलब है इट्स योर डेफर्ड रेवेन्यू, इट्स योर लायबिलिटी. आपने पैसा ले लिया, आपने कस्टमर को सर्विसेज नहीं दी है, सो आपके लिए कस्टमर को सर्विस देना एक लायबिलिटी हो चुकी है. लायबिलिटी का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है. बिकॉज ऑफ द अर्ली एडवांस यू टेकन, आपकी लायबिलिटी और इंक्रीज हो रही है, तो ऑन रेवेन्यू इज क्रेडिटेड. सो योर एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू ऑन रेवेन्यू. नाउ मान लो आपने सर्विसेज डिलीवर करना शुरू कर दिया and you start earning out of it, तो आपकी एंट्री क्या होगी. ऑन रेवेन्यू डेबिट टू रेवेन्यू क्रेडिट. रेवेन्यू गोज टू योर इनकम स्टेटमेंट. ऑन रेवेन्यू का अकाउंट जो है लायबिलिटी का वो क्लोज आउट हो जाएगा. एक और एग्जांपल देख के चलते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि आपने कैश पे कर दिया लेकिन खर्चा अभी इनकर नहीं हुआ है. सो व्हाट शुड बी द एंट्री. आपने कैश पे कर दिया तो कैश आपकी एसेट होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है. अगर आप कैश पे करते हो तो आपकी एसेट रिड्यूस होती है, तो कैश विल बी क्रेडिटेड. क्योंकि आपने एक्सपेंस अभी इनकर नहीं किया है और आपने पैसा एडवांस में दे दिया है, सो दिस बिकम्स योर एसेट. सो प्रीपेड एक्सपेंस आपकी एसेट होती है. आपने और प्रीपेड एक्सपेंस कर लिया तो एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है. योर एंट्री इज प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश क्रेडिट. जब एक्चुअल में एक्सपेंस होगा, योर एंट्री विल बी एक्सपेंस डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंस क्रेडिट. वेरी बेसिक प्रिंसिपल, A is equal to C plus L, क्लैरिटी है. सो ऑल दिस एंट्री विल बी pretty clear. द नेक्स्ट एंट्रीज उन्होंने दिखाया कि आप सेल्स करते हो और आपको पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे. तो अगर आपने सेल्स कर दिया है तो रेवेन्यू आपका हक बनता है. रेवेन्यू इज अ इनकम स्टेटमेंट आइटम दैट गोज टू द रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स का क्या बैलेंस होता है. क्रेडिट बैलेंस होता है. बिकॉज आपने सेल्स किया तो आपका रिटेन अर्निंग्स इंक्रीज होना चाहिए, तो आपने रेवेन्यू को क्रेडिट किया. सामने आपको पैसा मिलना है फ्यूचर में, इट्स योर एसेट. पैसा मिलना है तो आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है, तो अकाउंट्स रिसीवेबल गेट्स डेबिटेड.
सेम वे एक्सपेंसेस की बात करें, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंस योर रिटेन अर्निंग्स गोज डाउन। रिटेन अर्निंग्स का बाय डिफॉल्ट क्रेडिट बैलेंस होता है। बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस रिटेन अर्निंग्स कम होगा तो आपने एक्सपेंस को डेबिट किया। फ्यूचर में आप ये पैसा पे करोगे, सो इट्स योर लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। आपकी लायबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, तो यू आर क्रेडिटिंग दी अक्रूड लायबिलिटीज। क्लियर विद दिस बेसिक जर्नल एंट्री प्रिंसिपल्स? Yes. चलिए ठीक है, अगेन आई एम नॉट गोइंग इन थियरी ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज वगैरह क्या होता है। विल सॉल्व एवरीथिंग बाय ए इज इक्वल टू सी प्लस एल प्रिंसिपल। ओवर टू यू, क्विकली देखो एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, और उसके बाद 3 हम लोग साथ में सॉल्व करते हैं। Done. चलिए एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। रीड करना शुरू करो और हर एडजस्टमेंट के लिए आप मुझे एंट्री बताओगे, इफेक्ट बताओगे बैलेंस शीट और पी&एल पे क्या क्या होगी। So question says Titan company has reported a pre-tax income of $8,000. Upon the review, a certain errors were discovered. Record the adjustment entry to the pre-tax taxable income, और आप उसका इफेक्ट दो A is equal to C plus L। क्या असेट इंक्रीज होगा, क्या इक्विटी लायबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। So let's go one by one. Transaction number 1, company purchased $300 3-year insurance policy on 1 year 2 and expense it all on the date of payment. Yes. Is it done? Is it right? Is it wrong? Um, Wrong. You wrong? Because for this year we'll only have 100 expense. Right. आपका सही एंट्री क्या होना चाहिए? कंपनी ने गलत एंट्री क्या किया, एंड व्हाट इज द एडजस्टिंग एंट्री? Mm. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक की एक्चुअल एंट्री क्या होना चाहिए। Uh, Debit expense 100. ओके, लेट्स राइट इट हियर। ठीक है, इधर लिखते जाते हैं। सो करेक्ट एंट्री होना चाहिए डेबिट एक्सपेंस 100, फिर Uh, Credit cash 100. आपने कैश कितना पे किया है? सो 300. कंपनी हैज परचेज $300, तो कैश कितना आउट होगा, 100 या 300? 300. सो व्हाट इज द बैलेंसिंग 200? The deferred expense. और प्रीपेड एक्सपेंस। Prepaid expense. राइट, आपने फ्यूचर के लिए अभी पे कर दिया, सो दिस शुड बी योर करेक्ट एंट्री। सो दिस इज योर करेक्ट एंट्री।
अब आपने गलती से पास क्या कर दिया, व्हाट इज द इनकरेक्ट एंट्री? कैन यू रेफर टू द क्वेश्चन एंड चेक They व्हाट वाज द एंट्री पास्ड बाय कंपनी? they didn't expense. They expense the complete 300 on. So they did expense 300 to cash 300. So now let's check. कैश को तो ठीक क्रेडिट किया 300 से, सो दिस इज ग्रीन, दिस इज करेक्ट। लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या कर दी, एक्सपेंस करना था 100 से, कर दिया 300 से। तो कहना है इसे, जब आप एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे इसको ठीक करने के लिए, व्हाट यू हैव टू डू, कहना है इसे आपको एक्सपेंस को कम करना पड़ेगा बिकॉज यू हैव चार्ज्ड मोर, सो यू विल रिड्यूस द एक्सपेंसेस बाय 200 नाउ। Yes. और आपने, आपको करना क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस, आपने प्रीपेड एक्सपेंस को बुक ही नहीं किया है, तो आप यहाँ पर डेबिट क्या करोगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस क्रेडिट 200, दिस इज योर एडजस्टमेंट एंट्री। So this is always your step when you are doing a correction entry. First of all, step number 1, write down the correct entry. Step number 2, write down the incorrect entry. Step number 3, identify कि सही क्या है उसको छोड़ दो. So cash was credited, cash was credited, that's the right thing. Let's ignore it. गलत क्या हुआ, एक्सपेंस होना चाहिए था 100 से, हमने कर दिया 300 से, तो एक्सपेंस को 200 से रिवर्स करो। प्रीपेड एक्सपेंस बुक होना चाहिए था 200 से, हमने बुक ही नहीं किया, तो प्रीपेड एक्सपेंस को क्रिएट करो। सो दिस इज योर एडजस्टिंग एंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू एक्सपेंस क्रेडिट। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है आपका, असेट, लायबिलिटी या इक्विटी? Asset और प्रीपेड एक्सपेंस को आपने डेबिट किया तो असेट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? increase. सो लेट्स सी इफेक्ट, प्रीपेड एक्सपेंस में $200 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ एक्सपेंस आपका क्या होता है, एसेट, इक्विटी या लायबिलिटी? Asset. एक्सपेंस क्या होता है, व्हाट इज As एक्सपेंस? asset. एक्सपेंस कैसे एसेट होगा, कहां पर अपने कौन सी बैलेंस शीट में एक्सपेंस को एसेट्स में देखा है? Uh, कैन आई से equity. इट्स इनकम स्टेटमेंट अकाउंट, इनकम Mm, स्टेटमेंट अकाउंट है। सो yes. रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, इट गिव्स यू नेट इनकम, एंड नेट इनकम गोज टू योर रिटेन अर्निंग्स, और Yes. रिटेन अर्निंग्स आपका इक्विटी का पार्ट है। सो करेक्ट आंसर इट्स इक्विटी। सो यहाँ पर आप दो तरीके से इसको दिखा सकते हो, या आपका इक्विटी इंक्रीज हो रहा है या आपका नेट इनकम इंक्रीज हो रहा है। सो इन्होंने यहाँ पर अलग कॉलम ओपन करके रखा है नेट इनकम के लिए। सो व्हाट वी आर सीइंग, बिकॉज ऑफ दिस एंट्री आपका असेट इंक्रीज हुआ और आपका एक्सपेंस कम हुआ। बिकॉज आपका एक्सपेंस कम हुआ, आपका नेट इनकम इंक्रीज हुआ। सो दोनों अमाउंट आर शोन इन दी पॉजिटिव्स। क्लियर? Why did income बोलिए। क्यों increase हुआ? आपका एक्सपेंस कम होगा तो आपका नेट इनकम इंक्रीज होगा ना। Okay. सो सपोज आपका 1000 का सेल्स था, आपने गलत एक्सपेंस डाल दिया 300 का, तो आपका नेट इनकम था 700, लेकिन आपने एक्सपेंस अब कम कर दिया तो आपका नेट इनकम हो गया 900 का। सो योर इनकम इज इंक्रीज्ड। Yes. चलिए सेकंड वन आपके ऊपर, ट्राई एट योर ओन। अगर ना समझ में आया तो आई कैन हेल्प यू आउट। ट्रांजेक्शन नंबर 2, Uh, de- debit. Debit. Cash. Debit accounts receivable 2000. Credit revenue 2000. ओके।
तो असेट में पॉजिटिव फिगर जाएगा कि नेगेटिव फिगर जाएगा? पॉजिटिव। और नेट इनकम इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज। ठीक है, तो दोनों अमाउंट आपको यहाँ पॉजिटिव में दिख रहे हैं, 2000 एंड 2000। ठीक है, क्लियर है यस। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आ जाओ, रीड थर्ड पॉइंट एंड उसको सॉल्यूशन करने का ट्राई करो। Deferred revenue 2100. हाउ 2100? We only earned 30%, so 70% is still left of 3000. राइट, तो डेफर्ड रेवेन्यू इंक्रीज होगा 2100 से। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगी इसकी? Uh, आपने defer- $3000 का कैश कलेक्ट कर लिया, वो पूरा रेवेन्यू ले लिया, बट वॉज इट अ राइट थिंग टू डू? no. तो आपने रेवेन्यू कितना लेना चाहिए था? सिर्फ 30%, $900 का। तो आपने 2100 का एक्स्ट्रा रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। Yes. सो एंट्री विल बी व्हाट? रेवेन्यू डेबिट टू डेफर्ड रेवेन्यू क्रेडिट। रेवेन्यू नेगेटिव साइन से, क्योंकि आपकी नेट इनकम कम हो रही है, यू आर रिड्यूसिंग द रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू इज योर लायबिलिटी, लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही है, सो यू शो दिस एज अ पॉजिटिव अमाउंट। ये बहुत क्लियर रखना कब ब्रैकेट यूज करना है नेगेटिव अमाउंट के लिए, कब नहीं यूज करना है। अगेन ए इज इक्वल टू सी प्लस एल ओनली इज गोइंग टू हेल्प यू विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। ठीक है, Yes. चलिए फोर्थ पॉइंट ट्राई कीजिए। Uh, debit expense credit cash. ठीक है, एक्सपेंस डेबिट करोगे तो नेट इनकम क्या होगी? Uh, सॉरी, कम Decrease. अगेन, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट। Credit cash. Credit accounts payable. हाँ, वाई कैश कहीं ऐसा दिया नहीं है कि आपने पे कर दिया है, सो इट्स अकाउंट्स पेएबल। तो आपका नेट इनकम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? Decrease. और अकाउंट्स पेएबल आपका असेट है कि लायबिलिटी है? Liability. तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase. तो 450 पॉजिटिव में दिखाओगे कि नेगेटिव में दिखाओगे? Positive. क्लियर पॉइंट नंबर 4। Yes. चलिए फिफ्थ नंबर। Mm. यस, सोल्यूशन बताइए। Credit, prepaid expense, debit expense. ठीक है, सो डेबिट करोगे एक्सपेंस को तो आपका नेट इनकम कम हो रहा है, और प्रीपेड एक्सपेंस को भी आप क्रेडिट कर रहे हो तो आपकी एसेट कम हो रही है, तो ये अमाउंट भी आपका नेगेटिव में जा रहा है। क्लियर वाई बोथ अमाउंट्स आर इन नेगेटिव? Yes. चलिए नेक्स्ट सिक्स नंबर।
I don't know the allowance approach. चलिए मैं आपको हेल्प करता हूँ. सो डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड इज नॉट अलाउड अंडर यूएस कैप. डायरेक्ट राइट ऑफ मेथड में क्या होता है कि आप प्रोविजंस क्रिएट ही नहीं करते हो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. सो कंपनी ने क्या किया है कि एक नॉन गैप की मेथड फॉलो कर ली टू राइट ऑफ $650 का बैड डेट इन ईयर 2. हाउएवर आपने अलाउंसेस भी बनाए हुए थे. सो नॉन गैप मेथड इज नॉट अलाउड, यू कैन नॉट रिकॉर्ड द थिंग्स. नाउ आपने डायरेक्ट मेथड जब यूज किया, आपका एंट्री डायरेक्ट होता है बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट. बट क्योंकि ये गैप में अलाउड ही नहीं है, तो इसका करेक्शन क्या होगा, आपको एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी. तो आपने एंट्री क्या पास की थी, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट टू अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट. इसको आप रिवर्स करोगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट टू बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट. जब आप एक्सपेंस को क्रेडिट करते हो तो आपका नेट इनकम इंक्रीज होता है, सो दैट्स अ पॉजिटिव नंबर. असेट को आप डेबिट करते हो तो अगेन आपका असेट इंक्रीज होता है, सो दिस इज अ डेबिट नंबर. व्हेन वी गो टू FAR 3, व्हेन वी चेक द अकाउंट्स रिसीवेबल, हम ये मेथड पे डिटेल में बात करेंगे. Mm. ठीक है, क्लियर विथ 6 नंबर का एडजस्टमेंट एंट्री. Yes. चलो 7 ट्राई करो. Mm. Debit inventory, credit accounts, payable. वाई अकाउंट्स पेबल, डेबिट इन्वेंट्री, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स. आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो जाता है आपके P&L में, एंड P&L आपका इंक्रीज होता है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इंक्रीज्ड. बट योर आंसर इज राइट, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डेबिटिंग इन्वेंट्री. व्हाट कॉन्सेप्ट यू हैव फॉलोड. Accrual. बस समझाओ मुझे, थोड़ा एक्सप्लेन करो. We already purchased the raw. Right, entry is right. Your accounts payable is credited. You are on the purchase side. Your entry is perfectly okay. Inventory debit to accounts payable. But why you are debiting inventory? Because it's increasing. नहीं, एक important concept है. When we see revenue recognition, next session में we will understand. It is on FOB shipping point. अगर ये FOB destination होता तो no entry is required here. सो व्हाट इज FOB शिपिंग पॉइंट. FOB शिपिंग पॉइंट का मतलब है कि सप्लायर ने अपने वेयरहाउस से जैसे ही गुड्स बाहर निकाले, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ. इट इज कॉल्ड FOB शिपिंग पॉइंट. तो कंपनी ने जब 1300 के रॉ मटेरियल्स परचेस किए FOB शिपिंग पॉइंट पे, तो जैसे ही सप्लायर ने अपने गोडाउन से माल बाहर निकाला, कंपनी इज ओनिंग दैट इन्वेंट्री नाउ, बिकॉज इट्स FOB शिपिंग पॉइंट. तो आपने एंट्री रिकॉर्ड की. अगर ये होता FOB डेस्टिनेशन पॉइंट, तो उसका मतलब होता कि जो सप्लायर है ही इज स्टिल द ओनर टिल द टाइम गुड्स रीचेस योर वेयर हाउस. तो अगर ये FOB डेस्टिनेशन होता, तो वी विल ओन द इन्वेंट्री ओनली इफ इन्वेंट्री रीचेस टू माय वेयर हाउस. तो जब तक ये ट्रांजिट में होता तो ये मेरा इन्वेंट्री नहीं होता, अगर ये डेस्टिनेशन होता तो. बट बिकॉज इट्स FOB शिपिंग पॉइंट, जैसे ही सप्लायर ने अपने गोडाउन से माल को बाहर निकाला, वी आर द ओनर. और जब गुड्स ट्रांजिट में है, वी आर स्टिल द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स. समझे, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. हम लोग रेवेन्यू रिकॉग्निशन में ये डिटेल में डिस्कस करेंगे. Sure. चलो लास्ट 8 नंबर. हिंट दे देता हूं, आपने OCI का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. Debit and unrealized gain.
गेन को आप डेबिट करोगे तो वो लॉस नहीं हो जाएगा? क्रेडिट नहीं, क्रेडिट अनरियलाइज गेन। क्रेडिट अनरियलाइज्ड गेन, लेकिन वो कहाँ पर जाएगा, इनकम स्टेटमेंट में या ओसीआई में? उस OCI। राइट, आपके चार फॉर्मूला थे पीएसीई, उसमें जो ए है दैट इज अवेलेबल फॉर सेल सिक्योरिटीज। सो इफ यू सी, यहाँ पर उन्होंने इनकम स्टेटमेंट में इफेक्ट नहीं दिया है, उन्होंने सीधा आपके इक्विटी में इम्पैक्ट दिया है। सेकंड इम्पैक्ट क्या आएगा, आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपकी एसेट थी $1500 की, वो अब हो चुकी है $2000 की। सो एसेट इज इंक्रीजिंग, योर एंट्री इज इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिटेड 500 टू अनरियलाइज्ड गेन पार्क्ड इन ओसीआई, directly impacting your equity section. Clear with this example? आपको एंट्रीज बनाना आना चाहिए, then and then only you will be able to solve this type of problems. Yes. For this chapter, there Hmm. were a lot of interest MCQs you mentioned. We'll cover that later in some other chapter. Sorry, which, what was there lot of? When I did the MCQs for this, we had a lot of percentage interest of uh, different types, like 12% interest rate, 10% interest rate, non-interest bearing note, and I didn't know how to calculate that. So you said we would cover That will them. be taken care in bonds payable. जब हम bonds करेंगे, then we will see effective interest rate, zero coupon interest rate, all those things. ठीक है, they have just given all the working notes here, whatever we have discussed. So अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको एक बार अन कर सकते हो. If you see the last entry, just an example, valuation or investment account debited to unrealized gain, straight away going to your OCI. उन्होंने हर एक एंट्री का एक वर्किंग दिया हुआ है. So that completes our module 3. Let's take 5-10 minutes break. We'll come back. We'll quickly cover notes to financial statements, a theoretical topic. लेकिन इसको 10 मिनट बाद एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं. So I'll see you in 10 minutes of time.
चलिए शुरू करें. इफ यू आर बैक. Okay, let's start last concept for the day, and then we will continue tomorrow onwards. Module 4, which is your notes to financial statements. Now, this is a forming part of your complete set of financial statements. Generally, your complete set includes your balance sheet, your income statement, OCI, changes in equity, cash flow statements, and notes to accounts. Notes to accounts are very important for the readers of the financial statements to understand what is going on within the company. Now, once we read this entire slide, आपको पता चलेगा कि we only put a qualitative aspects of the notes to accounts. We do not disclose any quantitative aspect unless it is required. Also now, because we are going at a pace into the far section, मैं आपको लिंक कराता रहूंगा whatever we have done so far. अगर आपको याद हो, हमने जब बेसिक्स किए थे फार वन में, वी अंडरस्टैंड कि थ्री फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस होते हैं विच आर गोइंग कंसर्न अक्रूवल एंड कंसिस्टेंसी. They are not supposed to be disclosed unless they are not followed. So we will see that particular concept here कि अब notes to accounts में अगर कोई change in accounting principle है, estimate है, या if you are having an accrual going concern consistency getting changed, then and then only you disclose all those items into your accounting policy. Otherwise you do not disclose. तो जनरली होता क्या है, आपके पास जो नोट्स टू अकाउंट्स है वो दो पार्ट में होती है. सबसे पहले एक नोट होता है विच इज ऑन योर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, और आपके पास दूसरी नोट होती है फॉर अदर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड सिग्निफिकेंट डिस्क्लोजर्स. तो नोट वन इज योर क्रिटिकल नोट, जहां पर आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो करने के लिए जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यूज किए हैं एज अ प्राइमरी वन, आप उनके नोट्स टू अकाउंट्स आप देते हो. सबसे पहले मेजरमेंट बेसिस. सो मेजरमेंट बेसिस, फॉर एग्जांपल, इफ इट्स एन एसेट, इट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. If it is the inventory, then what is the basis for it? If it's a revenue recognition, what is the basis of it? तो आप आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना शुरू करते हो, राइट फ्रॉम इनकम स्टेटमेंट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट टू बैलेंस शीट, एंड यू चेक कि आपकी जो जो आइटम डिस्क्लोज है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उनके मेजरमेंट बेसिस क्या है. देन यू चेक मेजरमेंट बेसिस फर्दर फ्रॉम द गैप पॉइंट ऑफ व्यू कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रिपेयर की है, इज इट बेस्ड ऑन यूएस गैप, आईएफआरएस, लोकल गैप रिपोर्टिंग, ऑन व्हाट बेसिस योर फाइनेंशियल्स आर प्रिपेयर्ड. Then you also put a consolidation basis, whether you are consolidating the entity on equity method or what method, why you are consolidating, because of the shares control or because of the management power control. जब consolidation करेंगे, we will see different reasons. If you have a PPND, what sort of depreciation methods you have used? If you have an intangible asset, what is the amortization methods used? If you have an inventory, then FIFO, LIFO, weighted average, what pricing methodology is used? If you have done any estimates, for example, estimates for bad debt provision, estimates for the warranty, and what were the use of the estimations, fiscal year, for which financial year you are preparing the financial statements, revenue recognition, which methods you are using, cost completion method, percentage completion method, straight line method. So all the significant accounting policy जिसके बेस पे आपकी financials बनी है, you are going to present them. However, आप क्या नहीं present करोगे, you are not going to present account balance. तो आपकी notes कैसे होगी कि company is recording fixed asset at a historical cost. All the cost, including purchase price, non-refundable taxes, delivery charges, installation fee, they are capitalized. All the expenses which are bring to asset for its intended use are capitalized. ये आपकी note हो गई. But you are not going to say that during the year company has capitalized $10 million. No, dollar amounts are not required. Change in accounting principle, it is not included. Why? Because these are fundamental accounting assumption consistency कि आप year on year same accounting principle follow करोगे. However, if there is a breach in consistency, change in accounting principle, उस केस में आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. Again, going back to FAR 1, क्या डिस्क्लोज करोगे? What change has taken place? Is it required by GAAP? Is it required by law?
and its qualitative effect and its quantitative effect. You are not going to present dates and amount of your loans, what is the interest accrued on that, depreciation schedules, mathematics you are not supposed to present under your significant accounting policy. But we will mention that we change accounting principle, right? That is mentioned already in your basis. It's an accrual basis principle. Yeah. सो डेप्रिसिएशन जब आप नोट बनाओगे मेथड्स की वहां पर आप स्ट्रेट अवे लिख दोगे कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, company follows WDV method of depreciation. Theoretical aspect, yes. Mathematics, you are not supposed to give. इसके बाद if something is left out in note number 1, then you can go with a note number 2. Note number 2 is little bit more in detail note. So note number 1 से आपको users of the financials को generally सारी details मिल जाती है. Note number 2, they are generally a more detailed note. For example, inventory, you can go and say we have a 5 classes of our product. For 3 classes we use a FIFO method. For 2 classes we use a weighted average method. PP&D, again you can say we have a 3 class of PP&D. One is a equipment, one is a furniture, one is a office building. Any other investments, any other significant liabilities you can disclose. Changes in this shareholders equity, you can present that company has issued so many number of shares in the current year at this par value. This is the securities premium which is going to your EPIC account. Marketable securities, what is the carrying value, is there any unrealized gain or loss, and how it is treated. If it's available for sale security, it will go to OCI, otherwise it is going to go to income statement. Fair value estimates, very important for revenue recognition accounting standard, that what method of fair value we are using. Once we do revenue recognition, you will get to know आपके पास 3 options है: cost plus margin, fair market value, and residual approach. So what sort of estimates we are using? Is there any contingent liability? Again, जब हम FAR 4 में जाएंगे, we'll do a accounting standard on contingent liability. You record the liability only if it's probable and estimable. If it is not, only disclosure is required. Disclosure कहाँ पर करना है? Notes to accounts में करना है. Pension plan, where company is investing the money of the employees. Segment reporting, हमारे सिलेबस में नहीं है फार में, इट इज इन बार, बट सेगमेंट रिपोर्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. जहां पर आपका रेवेन्यू मोर देन 10% है या एसेट मोर देन 10% है, आप उनको रिपोर्ट करते हो सेगमेंट लेवल पे. फॉर एग्जाम्पल, आपका रेवेन्यू $100 है. आउट ऑफ दिस यू कैन से इंडिया में इट्स $50, यूएस में इट्स $30, and let's say you have a $15 in UAE and $5 in New Zealand. तो एक्सेप्ट न्यूजीलैंड आपका हर एक रीजन में रेवेन्यू मोर देन 10% है, तो आप जियोग्राफिकल लेवल पे भी रेवेन्यू को रिपोर्ट करोगे. दैट इज अ सेगमेंट रिपोर्टिंग. सेम गोस फॉर द एसेट. अगर आपका सेगमेंट एसेट मोर देन 10% है, तो आपकी बैलेंस शीट है वो भी सेगमेंट लेवल पे सेपरेटली रिपोर्ट आउट होगी. Subsequent event, next topic we will understand type 1 event versus type 2 event. Type 2 event अगर रहती है तो उनका डिस्क्लोजर करना कंपलसरी है. एंड चेंज इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगेन एज आई सेड आपको सारा डिटेल्स देना पड़ेगा, that why consistency is breach allowed by law, allowed by accounting standard, what is the quantification of the impact, everything. इसके अलावा पे कोई भी और चीज है, फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू हैव अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, a significant merger, anything which is significant for the users of the financial statement. Let's say you are expecting a huge political turnaround, let's say in the Gulf countries going forward. So you estimate your business may not work in the positive manner, you expect a losses in future. Or let's say oil prices are expected to go up significantly, so the profit which is in the current year at 70% may not even reach to 45% next year. So if there is any significant contingencies, significant adverse scenarios, vulnerabilities, you report into a disclosure. You report concentration risk also. Concentration risk क्या होता है कि मान लो आपका रेवेन्यू $100 है अक्रॉस 10 कस्टमर्स, लेकिन इसमें से एक कस्टमर $93 आपको दे रहा है, बाकी के 9 कस्टमर आपको मिलकर सिर्फ $7 दे रहे हैं. सो देयर इज अ कंसंट्रेशन रिस्क ऑन वन कस्टमर कि अगर वो एक कस्टमर चला गया, योर बिजनेस विल shut down. So that is called a concentration risk. So all the risk, uncertainties, concentration risk, future operations, discontinuing operation, war situations, estimated losses, all those things are
subject to disclosure in your notes to financial statements. Do I need to memorize the points and not subsequent? Sorry. No, memorize नहीं करना है. CPA exams will never test your memory, but yes, CPA exam will always going to test your concepts. तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है disclose, and that's why I say this is a small chapter. एक बार आप पढ़ लो, you should be knowing कि हाँ notes to accounts में क्या जाता है. अगर कभी कोई MCQ आ गया, you should not be surprised. ठीक है, Okay. ओवर टू यू. यू हैव अ मॉड्यूल 4 टू कंप्लीटली रीड. एक बार जस्ट रीड करके इसको छोड़ देना. नो नीड टू मेमोराइज एनीथिंग इन सीपीए एग्जाम्स एज लॉन्ग एज योर कॉन्सेप्ट्स आर गुड. क्विकली वॉक थ्रू करवा देता हूँ, आप डिटेल में इसको रीड कर लेना. So what you are supposed to disclose in note number 1, significant accounting policy. Basis of accounting, basis of consolidation, depreciation methods, intangible amortization methods, inventory methods, estimates, revenue recognition method. क्या आप include नहीं करते हो? Dollar amounts, account balances, any quantification of the debts, depreciation schedules, all those things you do not include. रिमेनिंग नोट्स जो नोट नंबर 1 में रह गया वो नोट नंबर 2 में आएगा. सो मटेरियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर असेट्स इंक्लूड्स योर इन्वेंटरी, पीपीएनडी, इन्वेस्टमेंट्स, चेंजेस इन द स्टॉक होल्डर इक्विटी, अपने नए शेयर्स इश्यू किए, स्टॉक डिविडेंड दिया, स्मॉल डिविडेंड, लॉन्ग डिविडेंड, ऑल दोस थिंग्स. मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसमें क्या गेन है, क्या लॉस है, कितना इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, कितना ओसीआई में जाएगा, व्हाट फेयर वैल्यू अप्रोचेस यू आर यूजिंग, what are your contingent gains and contingent losses, we will cover in a separate accounting standard. Is there any contractual obligations? Let's say बैंक ने आपको बोला है कि आपका current ratio 1:1.1 होना चाहिए if you want to take loan from us. अगर आपका current ratio significantly खराब है, you need to disclose. ये चीज अगेन हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर रेशियो एनालिसिस में. what are your pension plans, segment reporting, subsequent events. Subsequent event is also our next chapter. So all those things are disclosed in the remaining notes to the financial statement. इसके अलावा कोई भी अगर आपको रिस्क लगता है आपके बिजनेस में, यू हैव टू डिस्क्लोज इट. कोई सिग्निफिकेंट आपने एस्टिमेट्स यूज किए हैं टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यू नीड टू डिस्क्लोज देम. सिग्निफिकेंट एस्टिमेट्स अगेन आपने यूज किए हैं, लेट्स सी इन्वेंट्री मेथड, डेफर्ड टैक्स एसेट्स के लिए वैल्यूएशन अलाउंस, फार 6 में हम लोग जाएंगे तब हम लोग समझेंगे कि ये क्या होता है. लिटिगेशन है तो लॉयर का आपने प्रूफ लिया है टू एस्टिमेट योर प्रोविजंस. पेंशन रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपने एक्चुअल वैल्यूएशन लिया है. सो ऑल दोस थिंग्स यू आर सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर. अगर आपको कोई थ्रेट या वल्नरेबिलिटी लगती है, लाइक योर ऑपरेशंस, पॉलिटिकल रीजंस, वॉर रीजंस, कंसंट्रेशन रिस्क, all those things you also disclose in your notes to account. Theoretical topic, nothing significantly expected from this particular module 4. But एक बार आप इसको go through कर लेना. कोई भी question है then you can come back and ask me. Okay. All right, I think we'll stop it a day. I think next chapter है हमारा subsequent event. Maybe 1 hour it will take, simple, but I don't want to break it out into a multiple sessions. So कल हमारा target होगा, we will finish subsequent events. We will finish fair value measurements and we will finish the special purpose framework. So these 3 chapters are due tomorrow, and then FAR 2 हमारा हो जाएगा except 2 topics, ratio and revenue. So followed by ratio on the Friday, maybe Monday तक चलेगा वो, and then Tuesday, Wednesday, Thursday, maybe 3 sessions we will require for the revenue. So by end of next week, we will complete entire FAR 2 module. Okay. All right. So I'll see you tomorrow. कुछ भी questions हो तो कल लेकर आना. Okay. Bye. Thanks. Bye.